Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and safe. In previous video we read half chapter Florence Nightingale. In today's video we complete this chapter. Let's start. She applied the principles of sanitation and her constant care reduced the death rate from 42% to only 2.2%. उसने हफ्ज़ाने सेहत के असूलों का इतलाक़ किया और उसकी मुसलसल देखभाल ने शरह अमवात को 42% से कम करके सिर्फ 2.2% कर दिया. Her spectacular success in revolutionizing the care of soldiers brought her universal acclaim. फ़ौजियों की देखभाल के इनकलाब में उसकी शानदार कामयाबी ने पूरे आलम में तारीफ़ की गई. She used to visit the wounded soldiers in the night with a lamp in her hand. वो अपने हाथ में चिराग लेकर रात को ज़ख्मी सिपाहियों की अयादत करती थी. Her sweet voice and polite behavior were a source of contentment to the soldiers. उसकी मीठी आवाज़ और शाइस्ता तर्ज़ अमल सिपाहियों के लिए इत्मीनान का ज़रिया था. She was known as the Lady with Lamp and the Angel of Crimea. वो क्राइमिया के लोगों के लिए एक फ़रिश्ता जो हाथ में लैम्प पकड़े पाई जाती थी क्योंकि उन्होंने क्राइमियन वॉर ज़ख्मी सिपाहियों की मरहम पट्टी के दौरान उनके पास एक लैम्प होता था और वो हस्पताल का चक्कर लगाती थी. Before her arrival, the condition of the hospital was very bad. उनकी आमद से पहले हस्पताल की हालत बहुत ख़राब थी. There were no soap, furniture, towels, spoons, brooms and no proper lighting. यहाँ साबुन, फर्नीचर, तौलिए, चम्मच, झाड़ू और मुनासिब रोशनी भी नहीं थी. She brought determinations and started her work. उन्होंने पुरअज़म होकर अपना काम शुरू किया. Soon the dirty wards were clean and orderly. जल्द ही गंदा वार्ड साफ और मुनज़्ज़म था. The soldiers loved and worshipped her due to her tireless work, sympathetic attitude and polite behavior. सिपाही उसकी अनथक मेहनत, हमदर्दी रवैये और शाइस्ता तर्ज़ अमल की वजह से उससे प्यार करते थे और उनकी पूजा करते थे. Day and night she visited every bed in the hospital to see that no wounded was neglected. दिन रात वो हस्पताल के हर बेड पर तशरीफ़ लाती ताकि ये देखें कि किसी ज़ख्मी को नज़रअंदाज तो नहीं किया गया है. She worked for the comfort of all. उसने सबके लिए, सबके आराम के लिए काम किया. When the Crimean War ended, she returned to London. जब क्राइमियन की जंग ख़त्म हुई तो वो लंदन वापस चली गईं. Here she wrote two famous books based upon her experience. यहाँ उन्होंने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर दो मशहूर किताबें लिखीं. They are considered the classics in their field. जिन्हें वो अपने शोबे में क्लासिकी समझे जाते हैं. She set up an institute for nursing, the Nightingale's School for Nurses at St. Thomas Hospital at London in 1860. उन्होंने नर्सिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट कायम किया. नाइटिंगेल स्कूल नर्सों के लिए नर्सिंग स्कूल एस.टी. थॉमस हस्पताल लंदन में 1860 में कायम किया गया. She spent a large sum of money that was publicly subscribed in her honor.
اس نے ایک بڑی رقم خرچ کی جو اس کے اعزاز میں عوامی طور پر خرچ کی گئی تھی. She passed rest of her life in London in seclusion and devoted herself to her work. انہوں نے اپنی زندگی کا باقی حصہ لندن میں علیحدگی میں پاس کیا اور خود کو اپنے کام سے وقف کر دیا. In 1883, she was given the British Red Cross, and in 1907, she was the first British woman to be awarded the British Order of Merit. 1883 میں انہوں نے برٹش ریڈ کراس کے ساتھ کام شروع کیا اور 1907 میں وہ پہلی برطانوی خاتون تھیں جنہیں برٹش آرڈر آف میرٹ سے نوازا گیا. This great lady died in London on August 13, 1910. یہ عظیم خاتون 13 اگست 1910 کو لندن میں انتقال کر گئیں. Her work and devotion made nursing a noble profession in the world. ان کے کام اور عقیدت نے نرسنگ کو دنیا میں ایک باعزت پیشہ بنا دیا. اسٹوڈنٹس، یہاں آپ کے چیپٹر فلورنس نائٹنگیل کا سیکنڈ اسپیل بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. یہاں آپ کو کوشچن آنسرز دیے گئے ہیں. کوشچن نمبر 1, what was the condition of the hospitals? Question number 2, how did she pass rest of her life? Question number 3, where did she die? Question number 4, where did she establish her nursing school? نیکسٹ آپ کو ورڈ سینٹینسز اینڈ فل ان دا بلینکس دی گئی ہیں. فل ان دا بلینکس آپ کو بک پیج نمبر 30 پر موجود ہیں آپ کی. ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس ویڈیو. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب آور یوٹیوب چینل السحر سیکنڈری اسکول. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.